Hello dear students, as you know I have been covering tense series, so in today's lecture I have to cover the third tense from the present, which is present perfect tense. जैसे आप सबको मालूम है कि बेसिक टेंसेस बहुत ज़रूरी होते हैं अच्छी इंग्लिश बोलने लिखने और समझने के लिए. सो इफ़ यू नो ऑल द टेंसेस वेल it helps you speak, read, write and understand English more effectively. आज का जो tense है that is going to be very interesting क्योंकि this tense is very important and it's essential and it's also used in everyday conversation. So let's dive in. We have got four things in tense. जैसे students आपको पता है, जैसे सबसे पहले we have got the definition and that is ID in Urdu, helping verbs and formation. जैसे पिछली वीडियोस में about present simple tense and about present continuous tense I discussed with you कि किस तरह से we have different definition, ID in Urdu, formation and helping verb of tenses. So let's understand present perfect tense one by one. So सबसे पहले स्टूडेंट्स इसकी डेफिनेशन को समझते हैं कि what is the definition of present perfect tense. So we use this tense to talk about action, or you can say in other words this tense is used to show an action or state that happened at an unspecified time in the past but is connected with the present. Now what does it mean? कि ऐसा काम जो माजी में शुरू हुआ, माजी में स्टार्ट हुआ, but it has a connection or the result of that action is in present. Or in other words we can say that action started in the past and completed in the present is called present perfect tense. ऐसा काम जो माजी में शुरू हुआ और प्रेजेंट में ख़त्म हुआ या रिज़ल्ट उसका प्रेजेंट में हुआ या आया, that is present perfect tense. For example, if I say मैं खाना खा चुका हूँ, I have eaten food. Now the action started in the past. ज़ाहिर एक काम जो है वो माजी में शुरू हुआ 5 मिनट पहले, 10 मिनट पहले, and action ended in present. Similarly, if I say I have delivered a lecture. Now if I say I have delivered a lecture, I started the action in the past and I completed it in the present. Similarly, अगर मैं बोलूँ कि they have completed their work. Now the action started in the past, ज़ाहिर उन्होंने अपना काम माजी में शुरू किया होगा और ख़त्म कब किया, present में. For such actions we use present perfect tense even if it is unspecified time, like for unspecific actions or time. For example, if you say laborers have constructed the house, it means the action started in the past, एक हफ्ता पहले, 10 दिन पहले, 15 दिन पहले, depending on the work, और काम कब ख़त्म हुआ, present में. Now let's talk about its identification in Urdu, which is in short ID in Urdu. अच्छा, जैसे मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया कि आइडेंटिफिकेशन या ID in उर्दू की ज़रूरत हमें जो है तब पड़ती है, इसकी ज़रूरत हमें इसलिए पड़ती है कि वी अंडरस्टैंड और वी नो द टेंस वेरी वेल. लाइक इट हेल्प्स अस अंडरस्टैंड और रिकॉग्नाइज द टेंस कि कौन से टेंस का जुमला है. जैसे प्रेजेंट सिंपल का मैंने बताया, एनी उर्दू सेंटेंस एंड्स विद ता है, ता हूँ, ती है, ती हूँ, इट shows present simple tense or it is present simple tense. And why do we share Urdu identification? Urdu identification ज़रूरत खासकर हम इंडियन एंड पाकिस्तानी ऑडियंस के लिए पड़ती है ताकि वो उर्दू में सेंटेंस के टेंस को पहचान सकें, स्ट्रक्चर को देखकर, और उसी हिसाब से उसको अच्छे तरीके से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकें. तो इसी तरह वी हैव इट्स आईडी इन उर्दू, एनी सेंटेंस और एनी उर्दू सेंटेंस इफ़ इट एंड्स विद अलिफ है, लाइक लिया है, बोला है, और चुका है, लाइक जा चुका है, वो आ चुका है, वो पढ़ चुका है, और चुकी है, ओके, और छोटी है, जैसे कि वो वहाँ जा चुकी है या वो वहाँ गई है और उसने किताब ख़रीदी है. देन चुके हैं और बड़ी हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, मेहमान आ चुके हैं और मेहमान आए हैं. नाउ हेयर वी यूज़ चुके हैं और आए हैं, which has the same thing. उर्दू में मुख्तलिफ तरीके हैं कहने के, लेकिन इंग्लिश में it's the one way. I mean mostly it talks about the completed action, as we can see the name perfect. So perfect is for complete or completed action. Now let's look at its helping verbs. तो हर टेंस के अपने helping verbs, जैसे present simple के do does हैं, present continuous के is am are हैं, and helping verbs of this tense are has and have. We have has and have. So has is used when the subject is third person singular, like he, she, it, or any third person singular name like Rehan, Aisha, Nazia, or any third person singular. And have is used with first person like I and we,
It's used with second person you, and it's also used with third person plural like they, or any plural name like I, we, you, they, or any plural name we use have. And has is used when it is he, she, it, or any third person singular name. I hope you will now be able to know the difference. Now formation, now why do we share formation? Students, formation क्यों दिए जाते हैं? Formation helps students translate a sentence properly without making any grammatical mistake. So formation, जिसको formula भी बोला जाता है, तो इस tense का क्या formation है, क्या formula है? अगर कोई उर्दू का sentence चुका है, चुका हूँ, चुकी है से end होगा, तो ऐसे उर्दू के sentence को when you want to translate in English, you can follow formation of the tense. For example, we have subject, okay, doer of action. उसके बाद you will see HV stands for helping verb here. Like what are the helping verbs? Has and have. So as per the subject or according to the subject or in other words subject के मुताबिक आप क्या करेंगे? अपने helping verb का इस्तेमाल करेंगे, या तो has या तो have. उसके बाद we have third form verb, okay, broken, taken, like we can also call it past participle form. यानी आप third form का इस्तेमाल करेंगे, ना कि speak, ना कि speaking, बल्कि spoken, broken, taken, made, completed, third form of verb, past participle form of the verb. And then we have object, and then we have EOP. If there is any EOP extension of predicate, you will use EOP, otherwise you will just translate the sentence accordingly. Now we have some examples. So I have written few examples here, and I'll also be verbally sharing more examples with you. Like she has just completed the project, something that has recently ended or a recent action, and it also shows unspecified time. For example, I have visited New York, okay, past experiences and completed action. Similarly, if I say I have delivered a lecture or people have protested on roads, so you can make as many examples as you like from this tense. तो जिस तरह से आप क्या करते हैं इस tense को proper तरीके से समझ सकते हैं. Completed action, unspecified time, okay, action started in the past, completed in the present, identification जैसे मैंने आपको बता चुका हूँ, helping verbs, and then there are lots of other examples. Now let's talk about the last but not the least thing, that is about negative, interrogative and interrogative negative formations. अच्छा, इसके लिए formation लिखने की ज़रूरत नहीं है. अगर आप थोड़ा सा इसको इस तरह समझें, then it's going to be easy and simple, and you don't need to follow any formation. यानी थोड़ा सा shortcut, easy tips के ज़रिए समझें ताकि आपको याद रहे और आप इसमें किसी फॉर्मेशन को देखने की आपको ज़रूरत ना पड़े. तो स्टूडेंट, नेगेटिव का शॉर्टकट ये है कि हेल्पिंग वर्ब्स के बाद आप नोट लगाते हैं, चाहे वो हैज़ हो या हैव हो. यू आर जस्ट सपोज टू पुट नोट टू मेक इट नेगेटिव. फॉर एग्जांपल, आई हैव विजिटेड दिस प्लेस, आई हैव नॉट विजिटेड दिस प्लेस. शी हैज़ completed the project, she has not completed the project. Father has reached home, father has not reached home. Similarly, if you want to make an interrogative sentence, अगर सवालिया बनाना चाहते हैं आप, तो सवालिया क्या करते हैं स्टूडेंट्स? हैज़, हैव यानी हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले रखते हैं. ये इसका सिंपल सा और आसान सा शॉर्टकट है. सो जस्ट यूज हेल्पिंग वर्ब्स और पुट योर हेल्पिंग वर्ब्स बिफोर सब्जेक्ट to make an interrogative sentence. For example, have you done the task? Has she joined the college? Have people protested on roads? That makes your statement interrogative यानी सवालिया. जैसे क्या वो आ चुके हैं? Have they come? Have they reached? And if you want to make interrogative negative sentence, तो उसके स्टूडेंट दो तरीके. एक तो इनफॉर्मल है इसका, जैसे कि we have hasn't, contracted forms, or haven't. You can say hasn't she attended the meeting? Haven't you said anything? So we have to use informal if you want to use informal, otherwise you can just be formal. उसका क्या तरीका है कि has have सब्जेक्ट से पहले आएगा, not सब्जेक्ट के बाद आएगा. For example, have you not done your task? Has she not taken the class? Or have people not protested on roads against injustice? Hope you understood the tense. अगर कोई आपका सवाल है, कोई confusion है, so let us know in the comment and we'll get back to you. Last में I want to leave you with an example, and I want you to use helping verb, and you have to see which helping verb is suitable and the correct helping verb. For example, the sentence is police Desh conducted raid in different areas. So police has or police have.
let us know in the comment, and if possible change the sentence into negative, interrogative and interrogative negative statement so that it helps you practice the sentence or the tense properly. See you in the next video. Take care.